guys, welcome back to my channel. My name is Tanisha. So recently I went to the one of the famous markets of Delhi, that's Kamla Nagar market. I have been there before also, but जितना मैं सरोजनी जनपद जाती हूँ उतना मैं कमला नगर मार्केट नहीं गई हूँ. So I thought I should just go there and explore the market and see what all stuff is there. And yeah, I'll be showing you in the end what all I got from there. And before we start with the video, I want to tell you guys that कमला नगर मार्केट के रेट्स काफ़ी हाई होते हैं एज कम्पेयर टू सरोजनी एंड जनपद एंड वहाँ पे बार्गेनिंग करने भी काफ़ी डिफिकल्ट होती है. सो आई हैव ट्राइड टू बाय ऑल द आइटम्स दैट आर अंडर 250 rupees. So firstly I'll take you around the market and show you what all is there, and in the end I'll show you these items that I got from there. So without further ado, let's get into the video. So I'm here right in front of the mall lane and I found these tops that were for rupees 250 each. Next I found these kurtas that were also for 250 rupees each, and I didn't like any of them. Moving further, I found these crop shirts that were for rupees 200 each, and they really had some good collection with them. You may find such kind of shirts in Sarojini and Janpat as well, but जो इनके वाले प्रिंट्स थे I found them for the very first time. मेरे को ऐसे सरोजनी जनपद में अब तक तो नहीं मिले. अच्छा, ये वाली जो स्टॉल थी एकदम कॉर्नर में है एंड ट्रस्ट मी दे हैड सम अमेजिंग पीसेस फॉर जस्ट रुपीज़ 300 ओनली. These were the tops that I was talking about. I mean, where do you get such kind of tops? These open chest one for rupees 300. But the thing is, आप bargaining नहीं कर सकते हो and the prices are fixed. I really like this one as well. But 300 rupees for one top. Moving further, I found some more top stalls and यहाँ भी ये सब 250-300 के ही मिल रहे थे with no scope of bargaining. Honestly, the collection is quite good and different as compared to other markets. It's only that you should have some budget in your mind. अगर आपका budget अच्छा है, you can get some good pieces from here for sure. This guy was selling kurtas and plazos for rupees 400 each, जो बजट से बहुत ही ज़्यादा बाहर थे. सेम लाइन में आगे जाके आपको पूरी रो में बस नाइट वेयर्स ही मिलेंगे एंड कुछ टॉप्स भी मिलेंगे जो काफ़ी आउट ऑफ ट्रेंड थे. सो मुझे कुछ पसंद नहीं आया यहाँ पे. अच्छा, मेरे को दूर से लगा ये कुर्तेज़ हैं, बट आई जस्ट फाउंड आउट ये टॉप्स थे जो 250-300 की रेंज में थे एंड मुझे नहीं पसंद आए. नेक्स्ट आई फाउंड दिस गाय सेलिंग बैग्स फॉर रुपीज़ 350 एंड 450, बट देन देयर वॉज सम स्कोप ऑफ बार्गेनिंग एंड आई रियली लाइक दिस ब्लैक कलर वन जो मैंने लिया था एंड इसके रेट्स मैं आपको लास्ट में बताऊँगी. कुछ खास नहीं मिल रहा था तो मैं बस आगे चलती रही एंड देन आई फाउंड दिस गाय जिसके पास बहुत अच्छी मैक्सी ड्रेसेस थी, टॉप्स थी, बट वही स्टार्टिंग रेंज वॉज 300 एंड 350, बट द कलेक्शन वॉज गुड. कैन यू गाइज बिलीव, मुझे यहाँ पे 350 रुपीज़ में 6 इंच वाली हील्स मिल रही थी, बट साइज़ नहीं आया तो मैं नहीं ले पाई. Anyways, moving further, I found these t-shirts that was just for rupees 100, जो काफ़ी सरप्राइजिंग था मेरे लिए कमला नगर मार्केट के हिसाब से. बट द प्रिंट्स वर क्वाइट यूनिक जो मेरे को बाकी का मार्केट्स में अब तक नहीं मिले हैं. Lastly, I came across this stall where I found these dresses for rupees 250 and these tops for rupees 100 only, and that was it. Honestly, I just covered half of the market, and if you guys want, I'll do a part 2 of this market for sure. And anyways, let me show you the items that I got from there. So the first thing that I got from there is this lilac color crop top. I got this top just because मुझे color चाहिए था काफ़ी टाइम से, and this one for rupees 250 only, and it perfectly fits me so well. Next thing that I got was this t-shirt for rupees 100, and I actually found this color very cool for summer.
So I just got this one for rupees 100. Next I got this bag that I showed you in the video as well. He was quoting me rupees 350, but I got this one for rupees 250 after bargaining. Next thing that I got was this very cute top that was for rupees 250 only, and I really like this color and the prints as well, so just got this one for rupees 250. So the last thing that I got from there was this umbrella, because summers आ गए and we need an umbrella for sure. एंड मैं काफ़ी टाइम से ढूंढ रही थी, मेरे को मिनिसो में इसके प्राइस 600-700 मिल रहे थे, बट आई फाइनली गॉट this one from Kamlanagar market for rupees 180 only. So guys, that was it for my today's video and haul. I hope you guys like it. Please do let me know in the comment section if you want part 2 of this video, and don't forget to subscribe my channel and like my video. We'll meet in the next video. Till then, stay tuned and bye bye.